A very good morning to all the students of class 4. Dear student, today we will study the 13th chapter of social science named as industries. Dear student, we will study this chapter from the book Our Land, Our World. So, dear student, let's begin with the chapter 13 industries. Dear student, very first you should know what are the learning objectives of this chapter. So, dear student, you will learn about industries in chapter. Secondly, you will learn about types of industries, and lastly you will understand or learn about industrial awareness program in this chapter. So dear student, as I am sharing my screen with you, which will help you to understand the chapter more clearly. Let's begin with the chapter 13. So, dear student, this is chapter 13, industries. As we all need a large number of things to lead a life comfortably. Dear student, we all want balanced diet for eat, good clothes to wear, and comfortable house to live. As I am highlighting it, we also need vehicles, watches, telephones, televisions, computer, refrigerator, and fans. Most of these things made in or one factory. So basically these factories are called industries. Dear student, natural resources are used in producing these things. Which things? Which we need to lead our life comfortably. For example, sugar cane is used for producing sugar. शुगर केन की जरूरत आपको कहाँ होती है? शुगर के प्रोडक्शन में होती है. कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. कॉटन की जरूरत कहाँ पर होती है? कपड़ों को बनाने के लिए होती है. एंड आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स. Things used for making new things are called raw material. So, dear student, this is very important question. What is raw material? So, that things which we use to making new things are called raw materials. Natural resources give us raw materials, activities, and setup through which things are produced using raw material are called industries. So this is again very important question. What are the industries? So the activities and setup through which things are produced using raw materials are called industries. So dear student, this is very important for this chapter which you should know. So let's move ahead. Our country is an agriculture country, as you have studied in previous chapter. Our country is an agriculture country, but now our country is heading towards industry. An industrial country is one which manufactures things of need and comfort on a large scale. So, yes, student, this is very important question. What is industrial country? So, the answer is an industrial country is one which manufactures things of need and comfort on large scale called industrial country. Any country which wants to develop new industries must have four things. कोई भी country जिसे नई इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है उन्हें किन चीजों की जरूरत होती है? उन्हें चार चीजों की जरूरत होती है. जो फर्स्ट है रॉ मटेरियल, सेकंड मशीन, थर्ड पावर एंड फोर्थ वर्कर्स. इन चारों चीजों से हम कोई भी नई इंडस्ट्री स्टेबल कर सकते हैं. इंडिया हैज plenty of these things. The most large industries are situated on the basis of raw material, power and water available in the area. जहाँ पर आपको इंडस्ट्री लगानी है वहां पर किन चीजों का होना जरूरी है? रॉ मटेरियल का, पावर का और
वाटर का. So this is all about industry. Let's discuss the second learning objective, which is types of industry. Dear student, there are three types of industries. Number one, cottages industry. Number two, small scale industries. And number three, large scale industry. तो कितने तरीके की होती है इंडस्ट्रीज? तीन तरीके की होती हैं. Cottages industry, small scale industries, and large industry. So let's discuss the first one, which is cottage industry. So this is again very important question. What is cottage industries? So the answer is some skilled workers make things only in their house. तो कुछ skilled laborers, कुछ skilled workers अपने घर पे ही चीजें बनाते हैं. The member of a family work together to make things. For example, handloom, cloth, embroidery, jewelry, handicraft like bamboo workers are called cottages industry. जो चीजें, जो प्रोडक्शन आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री का वो एग्जाम्पल है. एंड व्हाट आर दी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर दी एग्जाम्पल ऑफ कॉटेजेस इंडस्ट्रीज? सो व्हाट, आप क्या बनाते हैं घर पे? हैंडलूम वर्क करते हैं, क्लॉथ्स एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं, ज्वेलरीज डिजाइन करते हैं, हैंडीक्राफ्ट भी करते हैं. तो वो सारा किसमें आता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर आता है. एज यू कैन सी इन माय स्क्रीन, दिस इज द पिक्टोरियल पार्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. सो number second is small scale industries. As I am highlighting it, in small scale industries, more money and some more people are needed. The work is done in a small factories. बहुत ही छोटी फैक्ट्रीज में काम होता है जहां पर ज्यादा पैसा, ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक गुड्स एंड हॉजरीज. सो ये सारी चीजें किसका एग्जाम्पल है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है. हॉजरी गुड्स, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक गुड्स, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं. द थर्ड नंबर इज large scale industry. Let's discuss the third type of industry, that is large scale industry. Yes student, in it manufacturing of goods is done on a large scale. Big mills are set up, thousands of people work and crores of rupees is invested in the factory. For example, units manufacturing iron and steel, railway engine, aeroplane, ship, heavy electric generators, refrigerator, TV sets, and textiles. These are example of large-scale industries. So, some of important large industries in our country are. Let's discuss it. तो बच्चों, ये कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं जिन्हें आइए हम डिस्कस करते हैं. आयरन एंड स्टील. मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू सेट अप अ फैक्ट्री. फैक्ट्री को स्टेबल करने के लिए आपको मशीन की जरूरत होती है. मशीन्स आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील. तो वो मशीन किससे बनी होती है? आयरन और स्टील से बनी होती है. Thus, the iron and steel industry is a base of all industry. इसलिए सारी इंडस्ट्री का बेस क्या है? आयरन और स्टील है. We have steel plants at जमशेदपुर. कहाँ पर है स्टील प्लांट? जमशेदपुर में है. भिलाई छत्तीसगढ़ में है. दुर्गपुर वेस्ट बंगाल में है. बोकारो झारखंड में है. राउरकेला उड़ीसा में है. So these are some state or city जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर क्या है? स्टील प्लांट्स हैं. These industries require iron ore, coal and manganese
manganese. These three minerals are available nearby these plants. So this is the pictorial part of Bhilai steel plant. Number second is heavy engineering and machine tools. Machines tools are used to make machines. HMT, that is Hindustan Machine Tools, makes machine tools. It has its factory at Bangalore at Kolkata, Pinjore in Haryana, Hyderabad in Telangana, Kochi in Kerala and Ajmer in राजस्थान. तो बच्चों मशीन टूल्स की मशीन है जो कहाँ पे है, जो किस नाम से जानी जाती है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स. ठीक है, तो उसकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, बेंगलुरु, पिंजौर, हरियाणा, हैदराबाद एंड कोची में एंड अजमेर में. So let's discuss heavy electricals. So as I am removing it, heavy electricals. So dear student, let's discuss heavy electricals. BHEL, which is Bharat Heavy Electrical Limited, makes big generators. They are used to produce power or electricity. Power is essential for running industries. Power की जरूरत क्यों होती है, industries को run करने के लिए. It has its factory in Bhopal, which is in Madhya Pradesh, and Hyderabad, which is in Uttarakhand. So this is all about heavy electricals. So the fourth one is cotton textile. Dear student, cotton textile industry is the oldest and largest industry of our country. सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल की. टेक्सटाइल मिल्स आर मोस्टली एट मुंबई. मोस्टली जो टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ है, मुंबई में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है, कानपुर में है, चेन्नई में है एंड सोलापुर में है. Cotton is grown mostly in Maharashtra and Gujarat. कॉटन मोस्टली कहाँ पर है, महाराष्ट्र और गुजरात में है. Therefore, most of the cotton textile mills are situated in these two states. इसलिए इन दो states में cotton textile की mills है. So, let's discuss the third and last learning objective, which is industrial awareness program. Dear student, as you all know, most of people are ignorant about the industrial revolution in the country. To help reach the industrial revolution to most of the people, our government has established Industries Corporation. It has branches in each state. It provides total know-how to people to set up an industries. गवर्नमेंट सबको अवेयर कराती है कि आपको किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए. It also helps them to get loan from bank or financial corporation. ये आपको किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए या फिर किसी भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से आपको लोन दिलवाती है. There is district industries center also in each district to help people. Trade Fair Authority of India in New Delhi. So every year a trade fair is organized in New Delhi. हर साल न्यू दिल्ली में एक ट्रेड फेयर होता है on a big level, बहुत बड़े लेवल पे होता है. A big permanent place called Pragati Maidan is reserved for the trade fairs held all the year around. कहाँ होता है, प्रगति मैदान में, जो कि दिल्ली में है. The main trade fair start from 14th November every year and about 14 days. तो जो ये ट्रेड फेयर है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होता है और 14 दिन तक प्रगति मैदान दिल्ली में लगता है. All type of industries, large, small and cottage from every state exhibit
their products there. Industries from foreign countries also take part in this fair. तो हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज एंड बाहर की इंडस्ट्रीज भी इस फेयर में अपना एग्जीबिशन लगाते हैं. Millions of people visit the fair to watch and buy. Thus, they become aware of industrial progress of country. तो बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं, घूमते हैं और अपने कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस फेयर में आके देखते हैं, जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में होता है. So, yes, student, this is all about chapter 13, which is industries. So, dear student, we will study the 14th chapter from our. We will study 14th chapter in our next class. Thank you.